22મી જાન્યુઆરીએ રામલલા મંદિરમાં બિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા છે શ્રીરામ। ત્યારે અવધમાં પણ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા 1008 કુંડી યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। जय श्री महाकाल, जय सिया राम। मैं हूँ माँ पवित्र नंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है 22 तारीख को लेके भव्य कार्यक्रम हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है आपको? अंदर से क्या फील हो रहा है? अनुभूति तो यहाँ के कन को, यहाँ के पशु पंछियों को पूछ लो कि उनके दिल में कितनी बड़ी एक आशा थी, इतने सालों से आज वो पूरी हो रही है। यहाँ का हर मिट्टी का कन भी उतना ही खुश है राम जी के आगमन पर जितने हम खुश है। देखो, जो हमारे लिए मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध अपने जगह सही है। हमारा जो काम, हमने ये बीड़ा जो उठाया है, राम जी 500 साल बाद एक झोपड़ी से उठकर अगर हमारे घर पधार रहे हैं तो हर किसी को दुख नहीं है, सुख ही है। हर किसी के मन में राम है, लेकिन हर कोई आगे आने के लिए जो विरोध करते अगर वो आएगा तो उसको लगेगा मेरा ईगो कहीं ना कहीं, हमारा घमंड हट हो गया या वो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन सबके मन में राम है। आज मारे आंगणे सोनानो सूरज उग्यो छे। सोनानो सूरज એટલા માટે કારણ કે પ્રભુ શ્રી રામ એ સૂર્યવંશી રાજા પ્રભુ રઘુકુળ રીતના એ અનુયાયી અને પરમ પિતા પરમેશ્વર પ્રભુ ખુદ આ ધરતી પર ફરી એકવાર પોતાના ઠાઠ સાથે ઠઠારા બંધ રીતે અયોધ્યાના એ ભવ્યાતિ ભવ્ય કાર્યક્રમ વચ્ચે હજારો લાખો લોકોની આસ્થા અને ધૂન વચ્ચે પ્રભુ શ્રી રામ પોતાના નિજ મંદિરમાં બિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા છે અને આ જ કાર્યક્રમને લઈને અયોધ્યામાં એક સાથે 1008 જેટલા યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અહીંયા યજમાન હશે, ગુરુજનો હશે અને તમામની વચ્ચે 1008 જેટલા યજ્ઞ કુંડી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે। આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે। મોટા મોટા વિદ્વાનો અહીંયા હશે અને યજમાનો હશે, જેમાં ગુજરાતીઓ પણ આ યજ્ઞમાં ભાગીદાર થવા માટે અહીંયા આવ્યા છે। ભગવાન કૃષ્ણે ગીતામાં એક વાત બહુ કહી હતી। એમણે કહ્યું હતું 9મા અધ્યાયમાં કે હું યજ્ઞમાં છું, એ આહુતિમાં છું જે યજ્ઞમાં ધરવામાં આવે છે। પ્રભુએ એવું કહ્યું હતું, અહમ કૃતોહમ યજ્ઞમ સ્વદામહમ નૌષધમ મંત્રો હવેમ વાહ્ય યજ્ઞિહુતમ। એનો મતલબ થાય છે કે હું જ યજ્ઞ છું, હું જ કૃત છું, હું જ યજ્ઞ છું, હું જ સ્વધા છું, હું જ ઔષધ છું, હું જ મંત્ર છું, હું જ ધ્રુત, હું જ અગ્નિ અને હું જ હવન શુભ કર્મ છું। એનો મતલબ થાય છે કે શુદ્ધ અગ્નિ સાથે થતા, શુદ્ધ ભાવ સાથે થતા યજ્ઞમાં ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાના અધ્યાય 9માં આ વાત કરે છે અને યજ્ઞના સાક્ષી બનવા માટે આપણે સૌ કોઈ ફરી એકવાર તૈયાર છીએ। કેમેરા પર્સન નરેશ વાઢેર સાથે મનીષ પુરોહિત, સંદેશ ન્યૂઝ, અયોધ્યા। અહીંની રજે રજમાં રામ છે, અહીંના લોકોના રગે રગમાં રામ છે। રામમય આ ધરા છે અને પ્રભુ રામની સ્વર્ગ સમા ધરતી છે। આ ધરતી પર 1008 યજ્ઞકુંડ પણ તૈયાર થઈ ગયા છે। અહીંયા 22 તારીખના દિવસે સામૂહિક યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન છે। દીપોમય કાર્યક્રમ હશે, ત્રેતા યુગવાળી દિવાળી હશે અને આ દિવાળીને સુશોભિત કરવા માટે અહીંયા યજ્ઞનું પણ આયોજન થયું છે। આ યજ્ઞ કેવી રીતે થશે, એમાંથી શું એની વિશેષતા છે, એ તમામ જાણીશું। મારી સાથે આચાર્ય જોડાયેલા છે। આચાર્યજી, સ્વાગત છે સૌથી પહેલે સંદેશ। ખૂબ 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 ધન્યવાદ, ખૂબ ધન્યવાદ। અયોધ્યાની ધરાથી હું બધા શ્રોતાઓનું ખૂબ સ્વાગત કરું છું। અચ્છા, તો આ કાર્યક્રમની વિશેષતા શું છે? આ યજ્ઞમાં ખાસ વિશેષ શું છે? એક બહુ સુંદર સરસ મજાનું અવસર આવ્યું છે કે જ્યાં લગભગ 550 વર્ષો પછી, આ કોઈ સામાન્ય ગાળો નથી, એક મોટો ગાળો છે। આટલી પ્રતીક્ષા પછી ભગવાન શ્રી રામ પોતાના દિવ્ય ભવ્ય મંદિરમાં બિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા છે। રામ રાજ્યનું સંકેત આખા વિશ્વમાં જવાનું છે, સંદેશ જશે અહીંની ધરાથી। તો મને લાગે છે કે આ સંયોગ છે અને રામલાની પ્રેરણા, એમની ઈચ્છા છે કે આ અવસરે તેમણે પૂજ્યપાદ સદગુરુદેવ ભગવાનનું અમૃત મહોત્સવ પણ રાખ્યું છે। આ સંયોગનો વિષય છે કે 14મી જાન્યુઆરીએ પરમ દિવસે પૂજ્ય ગુરુદેવની 75મો જન્મોત્સવ છે। તો ગુરુ અને ગોવિંદ બેઉનો ઉત્સવ છે, એટલે બધાના મનમાં ઉત્સાહ છે। આખા દેશભરથી લોકો આવી રહ્યા છે અહીંયા યજ્ઞમાં સંમિલિત થવા। સુરતથી પણ પૂર્ણેશભાઈના નેતૃત્વમાં ઘણા બધા લોકો અહીંયા આવ્યા છે। ત્યાંથી સબરીજીના જે વંશજો છે, જે વનવાસી, ગિરિવાસી, આદિવાસીઓ છે, તે બધા અહીંયા આવી રહ્યા છે અને એમનો ભાવ કેટલો મધુર છે, આપણે વિચારીએ તો એટલે મન ભાવુક થઈ જાય। આપણે
વિચારીને કલ્પના કરીને આપણે સજલ થઈ જઈએ કે ત્યાંથી એ લોકો બેર લઈને આવે છે ભગવાન માટે, બોર લઈને આવે છે. કેવો ભાવ છે. એક વખત એવો રહ્યો હશે જ્યારે ભગવાન વનવાસ કાળમાં હશે અને એમને માતાની યાદ આવતી હશે ત્યારે સબરીજી પાસે ગયા હશે ને ત્યાં જઈને તેમણે બોર ખાધું હશે ભગવાનનું. અને હવે એ લોકોના મનમાં કેવો ભાવ છે કે જ્યારે ભગવાન આજ હવે વનવાસ પૂરું કરીને, ત્યારે તો 14 વર્ષનું વનવાસ હતું, હવે 550 વર્ષનું વનવાસ પૂરું કરીને જ્યારે ભવ્ય મંદિરમાં બેસવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ત્યાંથી સબરીજીના વંશજો બોર લઈને ભગવાનને ખવડાવવા આવે છે. આ એક અદ્ભુત ઉત્સાહ ઉમંગનો વિષય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ આજે અયોધ્યાની ધરા છે, આપણે વિચારીએ તો રામજીના જીવનમાં એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ જેમનું યોગદાન છે એ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ છે. આજે લોકો કહે છે કે અમે ઢાંચાને નથી તોડ્યું, અમે નથી, બધાએ કોર્ટમાં કહ્યું, તો મારા ગુરુદેવ પણ કહે છે કે એ સાચી વાત છે, એમણે નથી તોડ્યું. પછી તોડ્યું કોણે? તો હનુમાનજીએ જ તોડ્યું છે ને. તો જે હનુમાનજીના લીધે આ બધી સફળતાઓ આપણને મળી, આજે ભવ્ય રામ મંદિર સર્જાઈ રહ્યું છે અહીંયા, તો એ હનુમાનજીની કૃતજ્ઞતા માટે આખો હિન્દુ સમાજ પૂજ્ય ગુરુદેવના નેતૃત્વમાં, અમારા બદ્રીનાથથી પૂજ્ય બાલક યોગેશ્વર દાસજી મહારાજ છે, પોતે યજ્ઞ સમ્રાટ છે, એમના નેતૃત્વમાં અહીંયા 1008 કુંડી યજ્ઞનું રચના થઈ રહી છે, જેમાં હજારો વૈદિક બ્રાહ્મણો બેસીને વેદ મંત્રોની સાથે જ્યારે હનુમાનજીને આહુતિ આપશે, પૂજ્ય ગુરુદેવના હજારો શિષ્યો બેસીને જ્યારે અહીંયા 1.25 કરોડથી અધિક આહુતિઓ હનુમાનજીને આપશે, તો મને લાગે છે કે એ દૃશ્ય એવું હશે કે પાષાણ પર પ્રસન્ન થઈ જશે. અહીંયા આમ કાજ કરી વેકો આતુર, પ્રભુ ચરિત્ર સુન વેકો રસિયા. આ પ્રભુનું ચરિત્રના સાંભળવા માટે અત્યારે આખું જગ मग्न થઈ ગયું છે. यज्ञ सम्राट जी से एमनी साथे पण बात करिए. आपका परिचय दीजिए और इस धरा पर आपको आके क्या फील हो रहा है? ये जब आप प्रभु राम के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी तो अनुभूति कुछ और होगी. जी, मैं बद्रीनाथ से आया हूँ, बालक योगेश्वर दास मेरा नाम है. और इस धरा पे आकर के क्या फील हो रहा है, बस जब कभी किसी को पूछा जाए, जब प्रभु श्री राम की दिव्य अलौकिक धरा पे जब उसकी 550 वर्षों के बाद तपस्या इतनी करने के बाद और आज सफल हो रही है कि आज ना जाने हम में से कौन कौन व्यक्ति, हम जो आज जितने भी दिख रहे हैं, ये 500 वर्ष पहले भी थे हम लोग. ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज ही पैदा हुए हैं. ना जाने क्योंकि जातक से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जो मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा और फिर वो उसका जन्म होता है. तो इसी तरह से हम लोग वही हैं जो सदियों से प्रभु श्री राम की सेवा में कार सेवा करते आ रहे हैं, उनके चरणों की सेवा करते आ रहे हैं, उनके मंत्र उच्चारण कर रहे हैं. जैसे सरजू मैया के घाट पे हम लोग ना जाने कौन झाड़ू लगाते होंगे. तो आज हमारी सबकी वो तपस्या फलीभूत हुई है और आज हमारे वो मनोकामना पूर्ण हुई है. और क्या उसके बाद बोला जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि वास्तव में हमारी वाणी में मैं भैया जी, मैं सच्ची कहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है. मैं सबको बोल रहा था, मुझे लग रहा है मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ. इतनी खुशी हो रही है मेरे को, वाणी हमारी जुबान में ताकत नहीं है और इतनी खुशी, इतनी हंसी, इतना आनंद आ रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा. और ऐसे लग रहा है जैसे आंखों से पानी आ रहा है. और भगवान श्री राम जी का वो आनंदमय विग्रह 22 तारीख को जब भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, उसके बारे में क्या बोले, क्या होगा, क्या होगा, वो आज से ही हमें ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है. और वास्तव में जो है पूरे भारतवर्ष के जितने भी श्रद्धालु जनता है, पूरे देश विदेश के जितने भी श्रद्धालु हैं जो प्रभु श्री राम को प्यार करते हैं, वास्तव में वो अभी से ही रो रो के उनकी आंखें सजल हो रही हैं. वास्तव में ये वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का ही विषय है. इसीलिए हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करके उनका नाम जाप करके, और इसी तरह से हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव जो हैं, उन्होंने सत्य संकल्प लिया है 1008 कुंड हनुमान महायज्ञ का. और वो यहाँ पर यज्ञशाला बनके तैयार हो गई है. सारे विद्वान आ गए हैं. कल से उनका जितने भी विद्वान हैं उनका वरण हो जाएगा और सारे वेद मंत्रों उच्चारण के द्वारा सारा कार्य आगे संपन्न होगा. आज कलश की भी स्थापना हो गई, पूजन हो गया है. इसी तरह से जो है हमारे गुरुदेव का जो 14 तारीख को जब यज्ञ प्रारंभ होगा तो उस दिन अमृत महोत्सव, उनका जन्मदिन 75वां मनाया जाएगा. वो हम लोगों के लिए वास्तव में वो जो क्षण होगा, वो वास्तव में वो भी वाणी का विषय नहीं है. हम लोग कभी भी उस चीज को बोल नहीं पाएंगे. सभी एकत्रित होंगे, वो खुशी का पल होगा, सब एक साथ मनाएंगे. बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम. તન ગદગદિત, મન ગદગદિત અને રોમે રોમ ગદગદિત. ગદગદિત કેમ ના થાય?
મારા રામનો અવસર છે અને આ અવસરમાં આ વિશેષતાઓ આ કાર્યક્રમની વિશેષતાઓ શું છે એ પણ આચાર્યજી પાસેથી જાણીએ। आचार्य जी, ऐसी कौन सी विशेषताएं रहने वाली हैं इस कार्यक्रम को लेकर, खासतौर पर उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, एक तो पूज्य गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव अमृत महोत्सव है, ये हम सब जानते हैं। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ भारत माता की अखंडता के लिए और पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है। ये भी हम विषय जान गए पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से। गुरुदेव ने लगभग 20 साल पहले से अयोध्या के धरा में कहा था। आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव पूरे वैश्विक पटल पर राम कथा के लिए, रामचरितमानस के लिए जाने जाते हैं। एक पूरे देश को लगता है कि ये सबसे विश्वसनीय वक्ता है रामचरितमानस के। पूज्य गुरुदेव ने इसी अयोध्या की धरा में लगभग 20 साल पहले कहा था कि मैं अयोध्या में राम कथा तब तक नहीं करूंगा जब तक भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं। और कितने लोगों ने उनसे आग्रह किया होगा ना जाने कितनी बार कि आप यहाँ राम कथा करिए, लेकिन वो संकल्प में बंधे थे, नियम में बंधे थे, तो उन्होंने कथा नहीं की। तो ये एक संयोग होने जा रहा है। अब उनका नियम भी पूरा हो गया है, अमृत महोत्सव भी है, भगवान श्री राम टेंट से अपने भव्य महल की ओर चल रहे हैं। तो इस समय लगभग 20 साल की प्रतीक्षा के बाद यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की श्री राम कथा होने जा रही है। और इतना भव्य पंडाल बना है, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कम से कम 50,000 आदमी बैठ करके कथा सुनेगा। तो ऐसी दिव्य व्यवस्था है। उसके साथ ही आप मंच की ओर जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि साक्षात राम मंदिर के परकोटे में, उसके प्रांगण में बैठकर, उसके द्वार पर बैठकर हम राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव का जो जीवन रहा है वो बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है। पूज्य गुरुदेव से साहित्यिक लोग जुड़े रहे, सामाजिक लोग जुड़े रहे, सांस्कृतिक जगत के लोग जुड़े रहे, संतों की श्रृंखला एक बड़ी जुड़ी रही। एक लंबा 75 वर्ष का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। तो इस आयोजन में विभिन्न राजनीतिक हस्तियां भी जो पूज्य गुरुदेव की विचारधारा से सहमत है, जो गुरुदेव की विचारधारा को सदन के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से वैश्विक पटल पर लेकर जा रहे हैं, ऐसे लोग उपस्थित होंगे। लगभग 8-9 राज्यों के महामहिम राज्यपाल भी उपस्थित होंगे, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र से माननीय मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। उसके साथ ही प्रतिदिन के सत्र में लगभग 2 सत्र, एक मध्याह्न का और एक सायंकाल अमृत संध्या, जिसमें देश की जो बड़ी विभूतियां, जो कला साधक हैं, जिसको हम कलाकार कहते हैं सामान्य भाषा में, जिनको हम टेलीविजन पर देखते हैं, उनकी प्रस्तुति यहाँ साक्षात होने जा रही है। जैसे मालिनी अवस्थी जी आ रही हैं, कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं, कुमार विश्वास जी हैं, मनोज मुंतशिर जी हैं, उसके साथ ही मनोज तिवारी जी आदि सभी लोग, हमारे पद्मश्री सुनील जोगी जी, ऐसे सब लोग उपस्थित होने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अद्भुत विषय है, लोगों में बहुत उत्साह है कि किसी प्रकार अपने जीवन को, देखिए जब ढांचा टूटा तब हम नहीं थे, जब भूमि पूजन हुआ तब नहीं थे, कम से कम हम उस समय हैं। हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि आज तक इतिहास में हमने सिर्फ टूटते हुए मंदिरों को देखा या पढ़ा। ये पहली बार इतिहास में होने जा रहा है कि हम किसी बनते मंदिर को देख रहे हैं। तो सबके मन में उत्साह है। स्वयं हेमा मालिनी जी अपने 55 लोगों के साथ अयोध्या की धरा में पहली बार रामायण की प्रस्तुति करने आ रही हैं। तो सबके मन में बहुत उत्साह है। अपने आप में यह अनूठा और अविस्मरणीय संगम होने जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो भी संभव हो वो 20 तारीख तक आए, दर्शन करें, पुनः घर जाएं, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर से ही कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ, और अपने घर में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कम से कम 5 दिए रामलला के लिए और पूज्य गुरुदेव के दीर्घायुष्य के लिए जलाएं। बहुत बढ़िया। અને આ સાથે એક બહુ સરસ મજાની વાત કરી હતી, જ્યારે કોર્ટમાં આ વાત ચાલતી હતી, કોર્ટમાં જ્યારે પુરાવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું કે રામને કોઈએ જોયા છે, તો એ જગતગુરુ રામભદ્રાચાર્યજી જેમણે કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે હા મેં પ્રભુ રામને જોયા છે। એમની જ નિશ્રામાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે અને આ કાર્યક્રમ એટલા માટે પણ વિશેષ છે જ્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું, આપણા આદિપુરુષો કહેતા હતા કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કહી કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદિયો બતાય। આ ગોવિંદનો દીવડો બતાવવા માટે 1008 યજ્ઞકુંડ તૈયાર છે અને આ કુંડ જે તૈયાર થઈ રહ્યા છે તે 22 તારીખ સુધી અહીંયા પૂજા અને અનુષ્ઠાન થશે, યજ્ઞ થશે અને એની જે આહુતિ છે એ જબરદસ્ત થશે। એની દિવ્યતા અવધની ધરતીની સાથે સાથે ભારતભરમાં પ્રસરાશે। કેમેરા પર્સન નરેશ વાઢેર સાથે મનીષ પુરોહિત, સંદેશ ન્યૂઝ, અયોધ્યા। જે દ્રષ્ટિથી તને જોઉં તે નજરે તું મને દેખાય, આ રામ તારી કહાની છે। તારી નગરીમાં છીએ અને જેની જેવી દ્રષ્ટિ એવો એનો પ્રભુ રામ। કોઈ કવિ મળે છે, કોઈ સંત મળે છે અને મને એક યુવા કવિ મળી ગયા છે અયોધ્યાની ધરતી પર। એમની સાથે થોડી વાતચીત કરીએ। પ્રભુ રામ માટે એમણે કેટલીક કવિતાઓ લખી છે, એમની સાથે જાણીએ, કારણ કે મારે વધારે બોલવાનું રહેતું નથી જ્યારે કવિ આપણી સાથે હોય। राम माटे एमणे કેટલીક पंक्तियों लखी है। राम जब अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या पुनः वापस लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तब 4 पंक्तियां रखता हूँ।
इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। और राम है क्या? अगर हम पत्थर पर राम लिख देते हैं तो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। तब कहता हूं राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर। और बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं से निवेदन है, अभी तक जो है आए नहीं हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए, छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन, हम अभी राम तक नहीं आए, हम अभी राम तक नहीं आए। और 4 पंक्तियां और उन्हीं नेताओं के नाम रखता हूं। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप दादा जी ने कहा, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है, यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तब कहता हूँ राम सबके हैं, राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 4 पंक्तियां रखता हूँ, तब सुनिए। बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए, आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से, कुछ हैं जो पास से नहीं आए, कुछ हैं जो पास से नहीं आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद मनीष जी आपका। तो આ પ્રતિભા અવધની ધરતીની છે, પ્રભુ રામની ધરતીની છે। કેમેરા પર્સન નરેશ વાઢેર સાથે સંદેશ ન્યૂઝ અયોધ્યા।